ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृभ्यां नमः। वाणी गर्भाभ्यां नमः। ओम गणपतये नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य तृतीय अध्याय। माघ मास में रामायण श्रवण का फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास का आज हम श्रवण करेंगे। जो भक्त श्री मद वाल्मीकि रामायण का पाठ करता है अथवा जिसके घर में इसका निरंतर पाठ होता है, उस घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर के सकारात्मक ऊर्जा एवं भक्ति भाव का संचार होता है। अतः आज तृतीय अध्याय में हम वाचन करेंगे। भगवान श्री राम के प्रति अपनी अगाध आस्था प्रकट करते हुए सनत कुमार उवाच अहो विप्रमिदं प्रोक्तं मितिहासं च नारदः रामायणस्य महातव्यं त्वं पुनर्वद विस्तारत। अन्यमासस्य महातव्यं कथय स्वप्रसादतः कस्य नो जायते तुष्टिर्मुने त्वद्वचनामृतात्। नारद उवाच सर्वे यूयं महाभागा कृतार्था नात्र संशय यत प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यता। महात्म्य श्रवणं यस्य राघवस्य कृतात्मनां दुर्लभं प्राहुरत्यन्तं मुनयो ब्रह्मवादिनः। शृणुध्वं ऋषयश्चित्रमितिहासं पुरातनम् सर्वपापप्रशमनं सर्वरोगविनाशनम्। आसीत्परापुरा द्वापरे च सुमतिर्नाम भूपतिः सोमवंशोद्भव श्रीमान् सप्तद्वीपैकनायकः। धर्मात्मा सत्यसम्पन्नः सर्वसम्भूतभूषितः सदा रामकथा सेवी रामपूजापरायणः। रामपूजापराणां च शुश्रूषुरनहङ्कृति पूज्येषु पूजानिरता समदर्शी गुणान्वितः। सर्वभूतहितः शान्तः कृतज्ञ कीर्तिमान् नृपः तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुता। पतिव्रता पतिप्राणा नाम्ना सत्यवती श्रुता तावुभो दंपती नित्यं रामायण परायणौ।
अन्नदानरतो नित्यं जलदानपरायणो तडागारामवाप्यादीन् संख्यातानवितेन तुः सोऽपि राजा महाभागो रामायणपरायणः वाचयेत् शृणुयाद् वापि भक्तिभावेन भावितः एवं रामपरं नित्यं राजानं धर्मकोविदं तस्य प्रियां सत्यवतीं देवा अपि सदा स्तुवन् विश्रुतो त्रिषु लोकेषु दम्पतितौ हि धार्मिकौ आययौ बहुभिर्शिष्यैर्द्रष्टुकामो विभाण्डकः विभाण्डकं मुनिं दृष्ट्वा सुखमाप्तो जनेश्वरः प्रत्युद्ययो सपत्नीकः पूजाभिर्बहुविस्तरम् कृतातिथ्य क्रियं शान्तं कृतासन परिगृहम् निजासनगतो भूप प्राञ्जलिर्मुनिमब्रवीत् राजोवाच भगवन् कृत्योद्य त्वदभ्यागतमनेन भो सतामागमनं सन्तः प्रसन्ति सुखावहम् यत्र स्यान्महतां प्रेम तत्र स्युः सर्वसम्पदः तेजः कीर्तिर्धनं पुत्र इति प्राहुर्विपश्चितः तत्र वृद्धिं गमिष्यन्ति श्रेयांसस्यानुदिनं मुने यत्र सन्तः प्रकुर्वन्ति महतिं करुणां प्रभो यो मूर्धनि ध्यायेत् ब्राह्मन् विप्रपादातलोदकम् स्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान् नात्र संशयः मम पुत्राश्च दाराश्च सम्पदश्च समर्पिता समाज्ञापयः शान्तात्मानं वयं किं करवाणि ते इत्थं वदन्तं भूपं तं सनिरीक्ष्य मुनीश्वरः स्पृशन् करेण राजानं प्रत्युवाचातिहर्षितः ऋषिरुवाच राजान यदुक्तं भवता तत सर्वं त्वत्कुलोचितं विनयावनतः सर्वे परं श्रेयो भजन्ति प्रीतोऽस्मि तव भूपाल सन्मार्गपरिवर्तिनः स्वस्ति तेस्तु महाभाग यत् पृच्छामि तदुच्यताम् हरिसन्तोषकान्यासन् पुराणानि बहून्यपि माघे मासी चोद्यतेऽसि रामायणपरायणः तव भार्यापि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा किमर्थमेतद्वृत्तान्तं यथावद् वक्तुमर्हसि राजोवाच शृणुष्व भगवन् सर्वं यत् पृच्छसि वदामि तत् आश्चर्यं यद्धि लोकानां वयोश्चरितं मुने अहमासं पुरा शूद्रो मालतिर्नाम सत्ततं कुमार्गनिरतो नित्यं सर्वलोकाहिते रतः
पिशुनो धर्म विद्वेषी देवद्रव्यापहारकम् महापातकी संसर्गी देवद्रव्योपजीवकः गोघ्नश्च ब्रह्महा चोरो नित्यं प्राणिवधेरतः नित्यं निष्ठुरवक्ता च पापी वेश्यापरायणः किंचित काले स्थितो ह्येव मनादृत्य महद्वच सर्वबंधु परित्यक्तो दुखी वनमुपमागमम् मृगमाशासनं नित्यं तथा मार्ग विरोध कृत एकाकी दुःख बहुलो न्यवसं निर्जने वने एकदा च्युत परिश्रान्तो निद्राघूण पिपासितः वसिष्ठस्याश्रमं देवाद् पश्यं निर्जने वने हंसकारण्डवाकीर्णं तत्समीपे महत्सरः पर्यन्ते वनपुष्पौघैश्छादितं तन्मुनीश्वरः अपिबं तत्र पानीयं तत्तटे विगतश्रमः उन्मूलवृक्षमूलानि मया क्षुच्च निवारित वसिष्ठस्याश्रमे तत्र निवासनं कृतवाहनं क्षीणस्फटिकसन्धानं तत्र चाहमकारिशम् पर्णैस्तृणैश्च काष्ठैश्च गृहं सम्यक् परिकल्पितं तत्राहं व्याधसत्त्वस्थो हत्वा बहुविधान् मृगान् आजीविकां च कुर्माणो मत्सराणां च विंशतिम् अथेयमागता साध्वी विन्ध्यदेशसमुद्भवा निषादकुलसम्भूता नाम्ना कालीति विश्रुता बन्धुवर्गै परित्यक्ता दुःखिता जीर्णविग्रहा ब्रह्मण क्षुत्रीट् परिश्रान्ता शोचन्ति भोक्ति किं क्रियाम् देवयोगात् समायाता भ्रमन्ति विजने वने मासी ग्रीष्मे तपार्ता ह्यन्तस्ता प्रपीडिता इमां दुःखवतीं दृष्ट्वा जाता मे विपुला घृणा मया दत्तं जलं चास्यै मासं वनफलं तथा गतश्रमा तु सा पृष्टा मया ब्रह्मण यथा तमम् न वेदयत् स्वकर्माणि तानि शृणु महामुने इयं काली तु नाम्ना वै निषादकुलसम्भवा दाम्भिकस्य सुता विद्मन् न्यवसद विन्ध्यपर्वते परस्वहारिणी नित्यं सदा पशून्यवादिनी बन्धुवर्गै परित्यक्ता यतो हतवती पतिं कान्तारे विजने ब्रह्मन् मत्समीपमुपमागता इत्येवं स्वकृतं कर्म सर्वं मह्यं न्यवेदयत् वसिष्ठाश्रमे पुण्ये अहं चेयं च वै मुने दम्पत्तिभावमाश्रित्यो स्थितो मासासिनो तदा
उद्यमार्थो गतो चैव वसिष्ठस्याश्रमं तदा दृष्ट्वा चैव समाजं च देवर्षीणां च सत्ततम् रामायण परा विप्रा माघे दृष्ट्वा दिने दिने निराहारो च विक्रान्तो क्षुतपिपासा प्रपीडितो अनिच्छया गतो तत्र वसिष्ठाश्रमं प्रति रामायण कथां श्रोतुं नवान्ना चैव भक्तिता तत्काल एव पञ्चत्वम् अवयोरभवन् मुनि कर्मणा तेन तुष्टात्मा भगवान् मधुसूदनः स्वदूतान् प्रेषयामास मदाहरण कारणात् आरोप्य मां विमाने तु जगमुस्ते च परं पदम् आवां समीपमापन्नो देवदेवस्य च कृणः भुक्तवन्तु महाभोगान् यावत् कालं शृणुष्व मे युगकोटिसहस्राणि युगकोटिशतानि च उषित्वा रामभवने ब्रह्मलोकमुपागतौ तावत् कालं च तत्रापि स्थित्वैन्द्रपदमागतौ तत्रापि तावत् कालं च भुक्त्वा भोगान् ततः पृथिवीं वयं प्राप्ता क्रमेण मुनिसत्ततम् अत्रापि समदतुला सम्पदतुला रामायण प्रसादतः अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तमेवं विधं मुने नवान्ना किल श्रोतव्यं रामायण कथामृतम् भक्तिभावेन धर्मात्मानं जन्म मृत्युपजरापहम् अवसेनापि यत् कर्म कृतं तु सुमहत् फलम् ददामि शृणु विप्रेन्द्र रामायण प्रसादतः नारद उवाच एतत् सर्वं निशम्यासो विभाण्डको मुनीश्वर अभिनन्द्य महीपालं प्रेयोष्वतपोवनम् तस्मात् शृणोध्वं विप्रेन्द्र देवदेवस्य च कृणः रामायण कथा चैव कामधेनुपमा स्मृता माघे मासे शीते पक्षे रामायणं प्रयत्नतः नवान्ना किल श्रोतव्यं सर्वधर्मफलप्रदम् य इदं पुण्यमाख्यानं सर्वपापप्रणाशनं वाचयेत् शृणुयाद् वापि रामभक्तश्च जायते इति श्री स्कंदपुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्मये माघ फलानुकीर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः।